the shunt winding and your armature field winding, they are connected in parallel. This is the one of the most common motors used in practical circuits. देखो बतन देखो इटा ना गोटे एग्जांपल तुमको दिया होची. This is your DC motor. And some of the chips are arranged here. That means what is inside of technology? DC motor speed control interface. DC motor speed control. As I have told you, our electrical and generate hochi, 70% is consumed by the motors. Motor AC motor, DC motor hochi. DC motor what advantage hela? It can operate in small voltage. 4 volt, 5 volt operate kar. And speed control is very effective. Effectively you can control the speed and the maintenance is very low. Because of these advantages, the DC motors are widely used. DC motors are widely used. So देखियो पिलाने जो खेलना व्यवहार कर जो तरे भी DC motors are being used. अच्छा बर्तन पथाला DC motor speed control हमें केम करके how we can effectively control the speed of DC motors. So certain factors are there. We have written here factor affecting speed of DC motors. So DC motor energy है DC energy, induction motor energy है AC energy. So the first factor is your voltage of the power supply. So when you deal with the electrical electronic circuits, the input voltage plays a very vital role. If there is any fluctuation, that will affect your service. I mean stabilizer कौन by use करचु? Any fluctuation in input voltage is not going to affect your system. Voltage stabilizer use करचे. Then another problem created by the transients. Input voltage transient किसी चीज़ it will affect your operations. So transient कौन? It remains for a very small duration of time, 3 milliseconds, 5 milliseconds, but it will damage the system. That means many things depends upon the voltage of the power supply. It should be stable and free from transients. It should be free from the transients. Then you can effectively control the speed of the system. এটা কোন করা যায়কি DC motor speed control interfacing. How we can control the speed of this DC motor using a microprocessor. বুঝিপারল? সো এই জিনিসটা যে ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସିଂ କରାହେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସପୋର୍ଟିଂ ଚିପ୍ସ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଆମେ ପଢ଼ିଛେ 8085 ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 8255 ଅଛି 8279 ଅଛି 8253 ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେସିଂ ଚିପ୍ସ ଆର୍ ବିଂ ୟୁଜ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସିପିୟୁଟା ଅଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ you are using 8255, 8253, 8279, etc. etc. And for the better efficiency, you can also go for the 8086 microprocessor. 8085 वाला 8-bit microprocessor, 8086 वाला 16-bit microprocessor. So the bit संख्या बढ़ी जाउची, processing become easier and more accurate ही जाउची and more faster is your. So but the fundamental is your 8085 microprocessor. So इथे हम कौन करछे देखो এই টোটাল জিনিসটা উপরে যে ইন্টারফেস করা হয়েছি এটা হচ্ছে আমার পিসি উপরে মাউন্টিং করা হয়েছি ইউ হ্যাভ ট্রানজিস্টর হিয়ার ইউ হ্যাভ রেজিস্টর হিয়ার ইউ হ্যাভ ক্যাপাসিটর হিয়ার টোটাল জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা পাই ই রিক্বায়ার সম সপোর্টিং চিপস রেজিস্টর এন্ড সম অ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট এন্ড সম প্যাসিভ কম্পোনেন্টস বুঝিপারল বর্তমান দেখিবা হোয়াট আর দি অদর ফ্যাক্টরস দ্যাট আফেক্ট ইয়োর স্পিড অফ দ্য ডিসি মোটর সেকেন্ড গোটে হলা type of power supply. Type of power supply. What type of the power supply is good for getting a better performance. And the third point is your winding specification. Winding specification. Whether it is AC motor or DC motor, you have some motor winding. ता माने या भीतर किसी ना किसी कॉपर रो मोटर वाइंडिंग थी देखो ये एक एक्सेस वाला अछि ता भीतर कितने तारटा एल्युमिनियम और द कॉपर वायर दैट बीन टेकन केयर इवन योर सीलिंग फैन में मोटर वाइंडिंग थी जदि कोनोसी कारण हाई वोल्टेज आसी गला देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट वाइंडिंग मे बी बर्न आउट
So again you have to go to the mechanic, he will check it and replace the winding. So winding रे ऊपर गोटे जिनस निर्भर करुच्ची. आजिकली winding machines have been developed where you can automatically wind the motors. The next point is your environmental temperature. Environmental temperature. तो को environment रे काम करछो? Room temperature रे काम करछो ना extreme temperature रे काम करछो? For example, जो माने डिफेंस रे काम करछन, ग्लेशियर रे काम, सीआरजेन एरिया रे काम करछन. The temperature is below 0 degree, -10, -15. So सेही जगह रे भी मोटर ठीक भारे काम करे दरकार. And again at the blast furnace, steel plant with the blast furnace अछि, higher 500 degree centigrade रे काम करियो. दिटा एक्सट्रीम जिंस आमे रूम टेम्परेचर रे काम करछे, बर्तन रूम टेम्परेचर काम करछे. One extreme is your coal, सीआरजेन एग्जाम, ग्लेशियर अछि, आउट है ब्लास्ट फर्नेस. तो से अनुसार हमको डिसाइड करिया पड़े हम को एनवायरनमेंट रे हमको काम करियो पड़ियो. सो एनवायरनमेंट टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर. देन टाइप ऑफ मैग्नेट. मोटर माने मैग्नेट रहे स्वाभाविक कथा. को टाइप ऑफ मैग्नेट परमानेंट हॉर्स टाइप व्यवहार करछो ना अदर टाइप ऑफ मैग्नेट व्यवहार करछो ता अनुसार परफॉर्मेंस रा व्यवहार करियो. देन फ्लक्स योक. फ्लक्स यू नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम फ्लक्स बोली कहउछे नहीं कि सेही जो तार योक टाइप व्यवहार करिवो को टाइप रे तमे व्यवहार करछो. That also affects your speed of the DC motors. Then phase. You know the phase? Single phase, three phase, the average speed of it. So that means these are the very common features which affect the speed of the DC motors. So DC motor को effectively run करिया में देखो जेतबेले एक किट टाइम व्यवहार करछ लैब रे एक किट गोटे व्यवहार करछ डीसी मोटर गोटे अछि सपोर्टिंग चिप अछि से हमु डिसाइड करिया पड़िबो को एनवायरनमेंट हम काम करछ कूलिंग एनवायरनमेंट ना हॉट एनवायरनमेंट काम करछ को टाइप रे फेज सप्लाई देछ हमें टाइप ऑफ मैग्नेट यूज करछ से गोटे देखि साला परे गोटे तयारी हिस आमे कोन इतरे प्रोक्योरमेंट करा गला आमे कोन स्पेसिफिकेशन देले दिस किट विल बी यूज्ड इनसाइड द लैब फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस. सो आमे टेम्परेचर डिफाइन करले कोन हला ना 18 डिग्री रो 28 डिग्री भितर हम काम करना सेते सेटअप मोटर्स को रखना. सो समस्त कर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. जे ब्लास्ट फर्नेस से काम करूची से जो मोटर यूज करियो ता स्पेसिफिकेशंस आर डिफरेंट. हमें लैब रे व्यवहार करछ माने इट इज एज गुड एज ए रूम टेम्परेचर सेते एटा पिक्चर को इंटरफेस कराइछ. पीसीबी मैन माउंट कर दिया जाइछि योर आईसीस कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स. Now, next we'll go what are the advantages of the DC motors. Advantages of the लिखते हो समझते? लिखते हैं Advantages of the DC motors. Advantages of DC motor. Why we should go for this DC motor? What are the special feature associated with this DC motor? First is your high starting torque. High starting torque. Torque जिनसे जानी पड़ता है ना? What do you mean by torque? Torque काम करेगा. Some force. Force linear नहीं पड़े, rotational नहीं पड़े. So it is the rotational speed दरकार पड़ती है. So it is the torque. It is the torque which decides the speed of the motor. So in case of DC motor, you have got a very high starting torque. For example, तमें जो इलेक्ट्रिक ट्रेन गुड़ा देखी थी वो ट्रेन रन कौन सी? और लोकल ट्रेन जोड़ा का अच्छी बड़ा मेट्रो रे. If you go to Mumbai or you go to Chennai, local transport is mostly by the electric trains.
इलेक्ट्रिक कौन दरकार तांकर it will travel from one end of the city to another end of the city 30 km 40 km लोक ऑफिस जीवे तेणु it will remain in the station for few seconds गोटे मिनिट में रहिबो people will immediately go inside and come out जो माने जाइथो मेट्रो जानि परिबो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आर remaining in station for 1 minute or half minute like this माने लोक धरे पसिबे rush in and rush out and immediately it will take the pickup immediately it will go very fast तापे कौन दरकार you require a very high starting torque local train जो हम व्यवहार करूचे those train require a very high starting torque in those applications these DC motors are born there is no substitute you have to use the DC motor काहेकि ना in those cases your induction motor cannot give the high starting torque. Then another important thing is very low maintenance. Compared to AC motor, DC motors are having very low maintenance cost. The normal routine maintenance करिया पड़िबो and you don't require any rigorous maintenance, costly maintenance. Then wide range speed control. Wide range speed control. So speed control is a very important aspect, and that can be controlled in micro level also, from 0 to 50 RPM. 0, 0.5, 0.6, 0.7, 10, 10.1, 10.2, up to 50 you can control. That means so wide range speed control is possible with the help of these DC motors. So you have high starting torque, very low maintenance and wide range of speed control. ये जो high range, wide range of speed control enables to have a number of applications, practical applications. Another point. Simple and less expensive speed control mechanism. Less expensive speed control mechanism. I कहले wide range speed control and another advantage is that simple and less expensive speed control mechanism. Wide range ro speed control possible hochi plus the speed control mechanism which are going to use is also very low in cost. Which one? So as I have told earlier, you can use a converter to control the speed of the DC motors. DC converter. Another method we can see that is you are using a chopper. Using a chopper, you can also control the speed of the DC shunt motor. So now it is clear to all of you what is a motor, what is a DC shunt motor, and what are the advantages of the DC motors and the application of this.